Now, the next definition is action and absorption spectrum. Action spectrum and absorption spectrum. We know that sunlight, it is made up of different wavelengths. Sunlight, it consists of 7 colors, and these 7 colors, they are of different wavelength. When this sunlight is passed through a prism, the sunlight, it splits into 7 colors, and these 7 colors, they have different wavelength, and that wavelength lies between 300 nanometer to 780 nanometer. The wavelength of visible spectrum lies between 300 nanometer to 780 nanometer. And it has been seen that chlorophyll pigment, it absorbs sunlight mainly of wavelength 470 to 500 nanometer and 660 to 780 nanometer. Chlorophyll pigment absorbs sunlight mainly with the wavelength 470 to 500 नैनोमीटर, जो कि कौन से कलर की है, ब्लू, एंड द 660 to 780 नैनोमीटर जो कि कौन सा कलर है, रेड, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रीन sunlight, it reflects the wavelength of green color which lies between 500 to 580 nanometer. यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मेनली कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, जिनकी वेवलेंथ 470 टू 500 नैनोमीटर है या फिर 660 टू 780 नैनोमीटर है, और ये किन की वेवलेंथ है, ब्लू और रेड कलर की. और जो ग्रीन कलर की वेवलेंथ है दैट इज 500 टू 580 नैनोमीटर, दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक by the chlorophyll pigment. So we can say the rate of photosynthesis is maximum in blue and red light and it is minimum in green light. If we plot a graph, if a graph is plotted between the wavelength of sunlight and the amount of the sunlight entrapped by the chlorophyll molecule, then that graphical representation showing absorption of different wavelength of light by a pigment, this is called absorption spectrum. The graph, this 13 point, ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास, ये क्या शो कर रहा है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो शो कर रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पिगमेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. यानी ये हमको क्या शो कर रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है, द क्लोरोफिल ए, ये जो पिगमेंट है, इट एब्जॉर्ब सनलाइट मेनली इन दिस रीजन एंड दिस रीजन, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है वो इस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब हुआ. और ये वेवलेंथ किसकी हैं, ब्लू एंड रेड. दिस इज द येलो, सॉरी द ब्लू कलर्ड, ये वाला भी जो है, दिस इज बाय क्लोरोफिल बी, एंड अगेन the maximum amount of sunlight is absorbed in the blue and red color. Carotenoids, the other pigments, for them this yellow colored graph is shown, and this also shows that maximum amount of sunlight is absorbed in this blue color. So this is the graph plotted which is showing the amount of sunlight absorbed at different wavelengths of sunlight. This graphical representation is called absorption spectrum.
And there is another term called action spectrum. The graphical representation showing effectiveness of different wavelength of light and actual rate of photosynthesis in terms of oxygen evolved or carbon dioxide utilized is called action spectrum. यानी कि a graphical representation which shows the effectiveness of photosynthesis, effectiveness of different wavelength of light and actual rate of photosynthesis, यानी कि किस wavelength पर फोटोसिंथेसिस का रेट एक्चुअली मैक्सिमम है, या हम ये कह सकते हैं कि कौन सी वेवलेंथ पर जो है ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, कौन सी वेवलेंथ की लाइट अगर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करे तो रेट ऑक्सीजन विल बी इवॉल्व्ड और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड. दैट इज कॉल्ड द एक्शन स्पेक्ट्रम. दिस ग्राफ, this shows the actual rate of photosynthesis in different wavelengths of light. या हम इसको कैसे कह सकते हैं कि इन्हीं वेवलेंथ और इन पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज. सो दैट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम.